Good to see you, students. This is Baqir. Welcome to the first question answers lecture of tribal discourse and the vision of golden age. स्टूडेंट्स इसमें हम एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स को ट्राइबल डिस्कोर्स एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज के. सो सबसे पहले आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. द ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल एज the method of sowing seeds in Jhum cultivation is known as the tribal chiefs got titles in central India under the British land settlements. Tribal went to work in the Assam and in Bihar. So the answer is students, the British described tribal peoples as wealth and swatch. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स का मानना था कि जो ट्राइबल लोग हैं वो लोग क्या है, दे आर wild and swatch. The method of sowing seeds in Jhum cultivation is also known as broadcasting or scatter or shifting cultivations. Usually जो methods होता है sowing seeds in Jhum cultivation जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, scattered या broadcasting के नाम से जाना जाता है. इस method को हम broadcasting या scattering भी कहते हैं. The tribal chief got land titles in central India under the British land settlements. ये सभी जानते हैं कि उनको क्या मिल गए थे, land titles मिल गए थे ट्राइबल्स को. ट्राइबल्स जो है वन वॉक टी प्लांटेशन आसाम में और कोल माइंस इन बिहार. यूजुअली जो ट्राइबल्स थे वो लोग जब फॉर एग्जांपल उनको अलाउ नहीं किया अंडर द फॉरेस्ट, तो बहुत सारे लोग टी प्लांटेशन के काम करने के लिए आसाम चले गए और बहुत सारे लोग कोल माइंस इन बिहार. नेक्स्ट है सेटेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स. झुम कल्टिवेशन प्लॉक द लैंड एंड सो द सीड्स. झुम कल्टिवेशन में हम क्या प्लॉक करते हैं लैंड को और सीड्स को सो करते हैं. दैट इज़ टोटली एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टूडेंट्स, क्योंकि झुम कल्टिवेशन इज़ आल्सो नोन एज द शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जिसमें प्लॉक तो सिर्फ हम सो करते हैं सीड्स को. यूजुअली हम स्कैटर्ड या ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, इसमें कोई प्लॉक वगैरह नहीं होते हैं. Cocoons were brought from Santals and sold by traders at 5 times to purchase price. हाँ, that is absolutely, क्योंकि हम जानते हैं कि cocoons जो है संथाल से ये लोग ख़रीद लेते थे और उसको बाद में हायर प्राइस में बेच देते थे. Absolutely true, students. Birsa urged his followers purity themselves, give up drinking liquor, stop believing in witchcraft, sorcery. हाँ, बिरसा ने हमने लेक्चर के दौरान भी डिस्कस किए थे कि बिरसा ने ये कहा था कि आप जो है पीना छोड़ दीजिए, शराब छोड़ दीजिए और जो जादुई चीज़ें हैं, जो जादू टोना है, उनके ऊपर भरोसा करना ख़त्म कीजिए और अपनी आपको प्योरीफाई करके जो प्योरिटी है, द बिलीवर ऑन गॉड्स, और ये आपको ज़रूर करना है. The British want to preserve the tribal way of life. नहीं, वो लोग कहीं ना कहीं ट्राइबल को ख़त्म करना चाहते थे, तो हम जानते हैं that is false. Next question is student, what problems did shifting cultivator face under the British rule? कौन कौन से problems का सामना करना पड़ा shifting cultivators को under the British? तो for administrative and economic reasons, the British government tried to settling the Jhum or shifting cultivators. For administrative और economic reason के लिए British government ने काफ़ी कोशिश की to settle the Jhum and shifting cultivators. However, settle block and cultivation did not prove to be the helpful to these Jhum cultivators. They often suffered because their fields didn't produce good yields. The new forest laws also affect the use of the shifting cultivators. Jhum cultivation is usually done on small patches of forest land. Under the forest laws, the British extended their control over all forest and declared that forests were state property. Thus, the Jhum cultivators were prevented from practicing Jhum cultivation freely. Many were forced to move to other areas in search of work and livelihood.
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ डिड द पावर्स ऑफ ट्राइबल चिप चेंज अंडर द colonial रूल। ये भी हम अच्छे से जानते हैं कि इनका पावर किस तरह से चेंज हुआ अंडर द colonial रूल। तो under the colonial rule, the function and the powers of tribal chiefs changed considerably before the arrival of British. These tribal chiefs enjoyed a certain amount of economic power and used to administer the control their territories, which were not so now. And they were to keep their land titles over a cluster of villages and run out lands. In this process, they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by the British officials. They were also had to pay tribute to the British and the discipline of tribal groups on behalf of the British. Hence, under the colonial rule, they lost authority they had earlier enjoyed among their people and were unable to fulfill their traditional functions. Next question is students, what account for anger of tribal against Dikus जो किस तरह का गुस्सा था under the tribals Dikus को लेकर। Dikus that means outsiders and outsider that means the British. The word Dikus means outsider or who came from outside like the moneylenders, traders, zamindar, contractors or the British. There are the number of reasons for anger of tribal against the Dikus. First, tribal practiced shifting cultivation, but British forced them to follow the satellite agriculture and also introduced the land settlements. Traders and moneylenders were coming into forest wanting to buy a forest produce at a very cheap rate, luring them to take cash loans at the high interest. The innocent and poor people initially fell in the trap of these moneylenders, and traders remained in debt throughout their lives. So the tribal considered the traders moneylenders as evil outsiders. Under the British rule, the tribal chief lost their authorities they had enjoyed earlier amongst their people, were unable to fulfill their traditional functions. Rather, they had paid tribute to the British. By the introduction of forest laws, the British evacuated them from their own lands. As a result, they became homeless and went in search of work and livelihood. Next question is students, what was Birsa's vision of golden age? Why do you think such vision appealed to the people of the region? ये तो हमने अच्छे से देखा था कि क्या था बिरसा का विजन गोल्डन एज का, और आप क्या सोचते हो ऐसी विजन अपील होना चाहिए टू द पीपल ऑफ द रीजन। तो बिरसा टॉक अबाउट द गोल्डन एज एट ए सतयुग। सतयुग का मतलब होता है द वे ऑफ ट्रूथ, an age of truth in which, like the past, the tribal people would live a good life, construct embankments, tap natural springs, plant trees or orchards, and practice cultivation to earn their living. He talked of an age in which the tribals would not kill one another and would live an honest life. His golden age consists of a reformed tribal society in which there was no place for vices like liquor, uncleanness, vices like liquor, uncleanness, witchcraft, and sorcery, and outside forces like the missionaries, Hindu landlords, and money lenders, traders, and Europeans. The vision was appealing to the tribal people of all vices. Outside force that Bitsa talked about were indeed thought for everyone as the root cause of their misery and suffering. तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि अल्टीमेटली दिस अपील टू द ट्राइबल पीपल की आपकी जो माइजरी एंड सफरिंग का कंडीशन है वो सभी इसी आउटसाइडर्स, एंड वी शुड नीड टू फाइट अगेंस्ट द डिकूस। तो इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर सेशंस का ये यहीं ख़त्म होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज रहता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे जोड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज बिल्कुल हमें बता सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोई भी डाउट इन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से नोट करके लिख लेना, और कोई भी डाउट है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होकर हमसे जोड़कर हमें बिल्कुल अपने क्वेरीज बता देना। जो गोल्डन एज था स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली दिस इज़ द गोल्डन एज जो इसके बारे में बुस्सा हमेशा बात करते थे। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।
आज का लेक्चर मैं यहीं पर रख देता हूँ। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज रहता है तो आप ज़रूर से हमसे कांटेक्ट कर हमें बिल्कुल बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।